morning, ma'am. Good Good morning, morning, ma'am. Good everyone. morning, Good ma'am. morning. Good Good morning, morning, Dipti. ma'am. Very good Good morning. morning, ma'am. Good Good morning. morning, Very good Poonam. morning, Morning, everyone. ma'am. And Good happy morning, Chhat ma'am. Puja to everybody from UP, Bihar, West Bengal, everyone who Good stays anywhere in the Good world morning. and practicing Dipti and ji. Good following morning, the Chhat ma'am. Puja. Good Thank morning. Good you. morning. Thank Thank you, Good you. ma'am. morning. It's a beautiful way of saying Good thank you to the sun god because छठ पूजा बेसिकली ये होती है ना लास्ट डे पानी के अंदर सो मतलब सारे 5 elements होते हैं सो वन stands in water and gives the offering of water to the sun. That is what Yes. Chhat Puja, the main puja ends like that only. Definitely fasting is a way to, like have faith in God and all that. But yeah, this is what it is that you water element and fire element and सूर्य देवता को प्रणाम करते हैं जल चढ़ा के. So congratulations everybody who's here to do another Chhat Puja and get an opportunity to say thank you to the sun because that's life. So बहुत सारे लोग फास्ट अभी कर भी रहे होंगे छठ पूजा पे तो बट देन बड़ा मजा आता है इंडियन फेस्टिवल्स प्रैक्टिस करने में because they all have a relevance and it is a way to joy and celebrate together. So that is a beautiful way. So yeah, I hope yesterday we all had done the works like magic practice. YouTube पे किसी ने पूछा था जो मैंने बहुत बाद में पढ़ा था कि अगर आप होम मेकर हो तो हम वर्क्स लाइक मैजिक प्रैक्टिस कैसे करेंगे. सो होम मेकर्स की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. सो होम मेकर के जो जो भी डोमेन्स हैं ऑफ कोर्स लाइक पूरा किचन और घर का मैनेजमेंट चलाना, सारे बिल्स का ध्यान रखना, एटलीस्ट ध्यान रखना, पे ठीक है जहां से भी पैसे आते हो और कहीं से तो पैसे आ रहे हैं, कोई तो कमा रहा है जिसके कारण मतलब उनके कारण उनको पैसे मिल रहे हैं तो उनके लिए थैंक यू बोलना, सारे यूटेंसिल्स के लिए थैंक यू बोलना, घर में इलेक्ट्रिसिटी जो है उसके लिए थैंक यू बोलना, जो टाइम घर में थोड़ा बहुत मिल जाता है वो फ्रीडम है कि आप कभी भी मार्केट जा सकते हो, कहीं जा सकते हो, उसके लिए थैंक यू बोलना. तो बहुत सारे एरियाज हैं. ऑफ कोर्स अपने फैमिली के लिए थैंक यू बोलना, जिस सोर्स से पैसे घर में आ रहे हैं वहां उस सोर्स के लिए थैंक यू बोलना. सो दैट इज व्हाट वी डू इफ यू आर अ होम मेकर. And it's a lot of it's the hardest work. I have been both, like for some phase in my life होता है ना when you're between your jobs or something like that or when you're transferred because transfers बहुत होते थे हमारे पहले शुरू शुरू में. तो मैंने वो फेजेस देखे हैं जब मैं सिर्फ होम मेकर होती थी एंड बिलीव यू मी होम मेकर बनना इज द टफेस्ट थिंग. इट इज इजी टू बी अ वर्किंग वुमन एंड इट इज वेरी वेरी टफ टू बी अ होम मेकर. आई मीन लाइक in fact people also take you for granted when you're at home and everybody for that matter. And it is not really a paid job yet you have to work really hard. ऑर्गेनाइजिंग पीपल आई थिंक सबसे बड़ा वो होता है रिश्ते निभाने और घर में जो स्टाफ काम कर रहे होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करना बहुत मुश्किल काम होता है. इट इज नॉट इजी एट ऑल बिकॉज आप सिर्फ ह्यूमन बीइंग से डील कर रहे होते हो. सो आई हैव सच ए ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन हु इज अ होम मेकर. ऑल्दो वी माइट थिंक कि उनके पास टाइम होता है और ये होता है बट they put so many things into order and we, I mean like when we work out we have a business we still step out of the house or we run a business और हम जो भी काम करते हैं जो भी एफर्ट करते हैं जिस चीज के लिए थैंक यू बोलते हैं हर चीज के लिए हमको पैसे मिलते हैं उसमें, है ना. अगर अगर मैं ट्रैवल भी करती हूँ तो मुझे वो उसका टीएडीए मिलता है. अगर मैं ऑफिस जाती हूँ चाहे और मैं बहुत काम कर रही हूँ तो वो मैं ऑफ कोर्स उसके लिए देयर इज अ लॉट ऑफ रिवॉर्ड दैट्स कमिंग इन. जिनका बिजनेस है वो जब जाके काम करते हैं अपने बिजनेस में बहुत मेहनत डालते हैं, क्लाइंट्स को क्रैक करते हैं, मीटिंग करने जाते हैं तो उनको उस बात के पैसे मिलते हैं. जो क्लाइंट होता है वो पैसे देता है. सो अगर आप ट्यूशन करते हो तो उसके पैसे मिलते हैं. अगर आप स्कूल टीचर हैं तो डेफिनेटली आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो उस बात के आपको पैसे भी मिलते हैं. सो देर इज ऑलवेज दैट रिवॉर्ड ऑल्सो दैट कम्स इन द फॉर्म ऑफ मनी. बट होम मेकर्स वर्क रियली हार्ड, दे वर्क द हार्डेस्ट. Okay, and secondly they're taken for granted and thirdly they get paid for the household expenses and for all their expenses basically. मतलब वो नहीं होता कि एक फैट चेक आ रहा है हर महीने के एंड पे या बिजनेस की तरह कि कांस्टेंट फ्लो ऑफ मनी आ रहा है. ऑफ कोर्स घर चला रहे हो तो पैसा तो आएगा ही ना. जो इंसान कमा रहा है घर का वो तो पैसे देगा ही उनको डेफिनेटली. बट फिर भी एक जो वो वाली फाइनेंशियल फ्रीडम होती है, कभी कभी मांगना पड़ता है पैसा, कभी कभी ऑल्दो
सबको पसंद नहीं आता है कि पैसे मांग के आप लो, ऑल्दो देर आर सम हस्बैंड्स हु वॉलंटरली गिव लाइक विदाउट आस्किंग, और एनीबडी फॉर दैट मैटर, अगर इन लॉज का वो जॉइंट बिजनेस है तो, बट फिर भी इट इज दिस थिंग. सो आई थिंक होम मेकर्स have can actually say thank you for multiple things that they have, but I still feel that every woman should be financially independent in her own way. I mean, there is always a way in which you can productively engage yourself. It could be working, even if it is free of cost for the NGO. There are so many people, like who are required at the NGOs, who are required to uplift or looking after people in the ओल्ड एज होम, जहाँ पे पेरेंट्स होते हैं जिनके बच्चे उनको नहीं रख पाते. मतलब मुझे कोई वो नहीं है उनसे, उन बच्चों से कि वो अपने माँ बाप को क्यों नहीं रख रहे. ठीक है, जो भी उनका रीजन होता होगा, हमको किसी के बारे में बुरा सोचना नहीं है. बट like just going once in a week and spending time with them, with all the parents there. और वो इतने मजेदार पेरेंट्स होते हैं, बहुत मजेदार होते हैं वैसे वो. मतलब ठीक है, इकट्ठे रहते हैं, अलग रहते हैं, तो बहुत सारे माँ बाप रहते हैं और छोटी छोटी बातों पे नोक झोंक करते रहते हैं और बातें करते रहते हैं, और ये कहते हैं कि बड़े दिन हो गए ये नहीं खाया वो नहीं खाया. सो like just going and spending time with them, that itself will make us productive. So all of us can be productive in our own way. So make yourself useful to the society in any which way that we can, and that is what it is about. And so, yeah, this is how homemakers have to do their gratitude practices, saying thank you to the furniture, saying thank you to the family, saying thank you to people going and coming, for the health of the family, for the gas, for the electricity, for everything that they use, which is their work area, and for their neighbors, for the time that they have, etc etc. ठीक है, so this is the answer to the question. Actually session खत्म हो गया था, उसके बाद में YouTube के comments पढ़ती हूँ, बीच में तो मैं पढ़ नहीं पाती. बट या ये वाला क्वेश्चन था. आज इंस्टा पे भी क्वेश्चन आया है, तो मैं वो इंस्टा से ही आंसर करने की कोशिश करूंगी. Definitely I'll make a video. So yeah, today we will be delving into chapter number 7, जिसमें हमारी हमारी लाइफ में देखो, हो सकता है कि सारे एरियाज बहुत अच्छे चल रहे हो, लेकिन एक एरिया है जहाँ पे हमको जादू लेके आना है ना. कुड बी टू डू विथ रिलेशनशिप विथ ब्रदर, could be that, could be to do with money, could be to do with the work area. Work area बहुत अच्छा नहीं चल रहा, गड़बड़ चल रहा है. Could be to do with relationship with a spouse, could be to do with business, could be to do with relationship with a friend, could be to do with health. हेल्थ अच्छी नहीं चल रही है. तो आज हमको वो एरिया पकड़ के और फिर उसके लिए हमको ब्लेसिंग्स करनी है. जो भी नेगेटिव एरिया है हमारी लाइफ का, जो जहां हमें लग रहा है दैट डार्कनेस है, ठीक है, वहां पे रोशनी लेके आनी है. जहां पे डार्कनेस है वहां रोशनी लेके आनी है. द लाइट ऑफ ग्रैटिट्यूड. सो इट सेज दैट जैसी ग्रैटिट्यूड की लाइट पड़ती है, बड़ी फोकल लाइट होती है वो जो अंधेरे वाला एरिया है वो पूरे रूम को इल्यूमिनेट कर देती है. और सिर्फ उसको इल्यूमिनेट नहीं करती है, वो बहुत सारे एरियाज को इल्यूमिनेट करती है. तो ग्रैटिट्यूड की रेज जाती है. सपोज किसी की रिलेशनशिप में इश्यू है किसी ए पर्टिकुलर पर्सन के साथ, सो उस पर्सन के बारे में और रिलेशनशिप के बारे में हम 10 पॉइंट्स लिखेंगे, ब्लेसिंग्स के, ग्रैटिट्यूड के 10 पॉइंट्स लिखेंगे. और उन वो जो पॉइंट्स हैं उनको, उनकी वजह से हमारे बहुत सारे ब्लॉकेजेस हो रहे थे. पैसा खुल के नहीं आ रहा था. हो सकता है देयर वाज 5 लाख रुपीस वेटिंग टू कम इनटू योर अकाउंट, बट वो नहीं आ रहा था क्योंकि ब्लॉकेज यहाँ पे था उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ रिलेशनशिप में. ठीक है, हो सकता है नीज में पेन हो रही हो, कुछ टाइम से बहुत आराम से वॉक नहीं किया जा रहा हो, 1 महीने से. वो उस रिलेशनशिप के ब्लॉकेज के कारण नीज में पेन हो रहा था, है ना. बिकॉज डिजीजेस आर ऑल साइकोसोमैटिक. डिजीजेस सारी साइकोलॉजिकल, मतलब माइंड से ही आती है. तो हो सकता है वो इस वजह से हो रहा हो. तो अगर हमने उस पर्टिकुलर एरिया में, सो रूट कॉज क्या हुआ इन सब में? रूट कॉज यही हुआ ना, दैट रिलेशनशिप विद दैट ए पर्टिकुलर पर्सन, उसके साथ रिलेशनशिप में. और जैसे ही उसमें आप रोशनी लेके आओगे, बाकी के ये जो 3 एरियाज मैंने मेंशन किए हैं, यहाँ पे भी इल्यूमिनेशन आ जाएगा. and you will see that it will just start growing. The all the other 3 areas will also, वहां पे भी एनर्जी ब्लॉकेज खुल जाएंगे.
इम्पेडिमेंट्स जो थे, ऑब्स्टिकल जो थे, वो हट जाएंगे एंड वी विल सी दैट विक्ट्री एंड सक्सेस फ्लोइंग इनटू आवर लाइफ। और इस एरिया में तो आएगी ही जिसके लिए हमने ग्रैटिट्यूड लिखा है, रिलेशनशिप विद ए पर्टिकुलर पर्सन, बट वो बाकी की जो 3 एरियाज है जहां पे इसकी वजह से ब्लॉकेजेस हो रहे थे वो भी खुल जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे, और जैसे फ्री फ्लो डैम में से पानी निकलता है वैसे पानी निकलना शुरू हो जाएगा। मतलब लाइफ विल बी फ्लोइंग इन फुल फॉर्म। दैट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ डूइंग दीज प्रैक्टिसेस। सो अगर आप मनी के लिए थैंक यू बोल रहे हो तो सिर्फ मनी के लिए थैंक यू नहीं बोल रहे हो, मनी की वजह से हो सकता है बहुत एरियाज में गड़बड़ चल रही हो। हो सकता है कि मनी मनी को इतना ज्यादा वरी और फियर वाला हमने एनर्जी पास्ट में दी हुई हो, नहीं पता था, तब छोटे थे, सुन रहे थे घर में लोगों को बात करते हुए, मे बी ग्रैंड पेरेंट्स को, कि पैसा क्या पेड़ पे उगता है क्या, उसने पैसा इस तरह से कमा लिया है, इस तरह की कोई भी बात हमने सुनी होगी तो वो एक घर बना लेती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कि पैसे से लोगों का दिमाग खराब हो जाता है, पैसा लोगों की बुद्धि भ्रष्ट कर देता है, मनी डज दिस टू पीपल, मनी इज एन इविल, मनी लाइक कैन रियली twist around somebody's head. Money can make one go crazy and arrogant. So we may have heard all these little things, बचपन से अभी तक, and that actually has become a big, energy blockages for money. So now that we are doing the money wala chapter, practice the magic money, where we had taken a note and we pasted, thank you for all the money I've been given throughout my life, and we picked it up once in the morning and once in the evening and said thank you. I mean, like, we read whatever we wrote and we really, like, felt gratitude for all the money that was spent on us. Now, because of that reason, maybe that was the reason why somebody was not thriving in the career. Because thriving in career means छप्पर फाड़ के पैसा आ रहा है, it is raining money on you, है ना? Thriving in career means that अगर किसी की जॉब बहुत अच्छी चल रही है, मतलब उसको सपने सपनों वाली सैलरी मिल रही है, मतलब बहुत अच्छे से वो कमा रहा है पैसे, बहुत अच्छे से पैसे आ रहे हैं। किसी का बिजनेस है तो थ्राइविंग बिजनेस मीन्स खूब भर भर के पैसे आ रहे हैं, है ना? सो वो वाली प्रैक्टिस करने से ये वाले एनर्जी ब्लॉकेजेस सारे खुल जाएंगे। तो एक प्रैक्टिस बाकी सारी प्रैक्टिसेस को बहुत स्ट्रांगली अफेक्ट करती है। तो आज वाली जो प्रैक्टिस है ये हमको अपनी लाइफ का नेगेटिव एरिया देखना है कि कौन सा हमारा नेगेटिव एरिया है, और उसमें हमको खूब सारी, मतलब वो बहुत सारी रोशनी हमारे बाकी डोमेन्स में भी लेके आती है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इट, बिकॉज एनर्जी शिफ्ट हो जाती है, एंड आई ऑलवेज से एनर्जी इज लाइक लाइफ इज फ्लोइंग फ्रॉम द सेम पाइपलाइन। तो वहां पे जो ब्लॉकेजेस हो रहे हैं वो खुल खुल के लाइफ को एंजॉय नहीं करने दे रहा हमको। एंड विच वी विल, व्हेन वी रियली आइडेंटिफाई दैट मुझे कौन से अब मेरा लाइफ का वो एरिया है जिसमें मुझे रोशनी लेके आनी है, जिसमें थोड़ा धीरे धीरे डिफरेंस आ रहा है ना? जैसे बाकी चीजों में तो हमारी लाइफ में बहुत फर्क आ गया। All our lives are transformed for all of us, right? We've seen from where we were last year to where we are now. There has been huge and humongous difference in our life and transformation within and without both, है ना? अंदर भी चेंज आया हमको एज अ पर्सन, और विदाउट भी चेंज आया है in the outer world. So but then when we really kind of change that, shift that energy जो हमारे सबसे ज्यादा नेगेटिव एरिया में है, उसकी वजह से बहुत सारी चीजें रोशन होंगी, और यही हमारा आज का चैप्टर भी है। So I'll just bring that on the screen also. The magical way out of negativity. So जादू से हम नेगेटिविटी से बाहर स्टेप करेंगे, और उसकी वजह से हमारे बहुत सारे दुख दर्द भी कम होंगे जो बाकी एरियाज में थे। दैट इज व्हाट इट इज अबाउट। जिस तरह से मैंने अभी मेंशन किया है, सो रोंडा बर्न के इलस्ट्रेशन इतने बढ़िया होते हैं। तो उन्होंने ये बताया, जैसे ये पूरा डार्क रूम, okay, it was a dark room till this door opened. So dark room means this is the negative area of our life, this is the dark room of our life. It could be relationship, it could be money, it could be career, it could be health, it could be business not like going up, it could be job, not getting a job, it could be whatever, so anything जो भी आप सोचते हो जहाँ पे आपका एरिया है, मेंटल हेल्थ का एरिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो ये डार्क रूम है, इसका डोर आज हम खोलेंगे बाय द फोर्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। सो ग्रैटिट्यूड इज डेफिनेटली अ फोर्स, okay? So by that force of gratitude, by just
penning down, लिख के करने वाली practice है. We need to write it down today. It is not to be done in the mind. It is to be written down. So you have to really sit back and diligently think and do this practice. And it has to be done just once in a day. It's not that you have to do it in the morning and again in the afternoon and again in the evening. It is not like that. It is just to be done once. But then इसके साथ और भी practices है कि हमको पूरे दिन कुछ नेगेटिव नहीं बोलना है, बिकॉज हमको आज की एनर्जी बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी अपनी डेलिबरेटली, एंड दैट इज व्हाट इट इज अबाउट. सो हम इसको पढ़ते हैं. सो हु इज रीडिंग टुडे? Aarti is reading. Yeah, hi Aarti. Good morning, ma'am. Very good morning. Good morning, ma'am. Should I पढ़ो start? जी. Day 7, the magical way out of negativity. I quote, a thankful person is thankful under all circumstances, unquote. Baha'u'llah, Persian founder of the Baha'i faith. Whether it's a relationship in turmoil, financial pressure, a lack of health, or problems in a job, negative situations arise because of a lack of gratitude over a long period of time. If we are not grateful for each thing in our lives, we are unintentionally taking those things for granted. Taking things for granted is a major cause of negativity because when we take things for granted, we are not giving thanks in return and we stop the magic happening in our life. Just as giving thanks to others will always lead to our life magically increasing, so must taking things for granted always lead to our life decreasing. Are you grateful for your health when it's good? Or do you only notice your health when your body gets sick or hurts? Are you grateful for your job every day? Or do you only value your job when you hear that there will be cutbacks? Are you grateful for your pay or salary every single time you receive it? Or do you take your pay or salary for granted? Are you grateful for your loved ones when everything is running smoothly? Or do you only talk to others about your loved ones when there are problems? Are you grateful when your car is working well? Or do you only think of your car when it breaks down? Are you grateful to be alive each day? Or do you take your life for granted? Taking things for granted results in complaining, negative thoughts, and words. So, when you complain by the by the law of attraction, you must bring more things into your life to complain about. If you're complaining about the weather, the traffic, your boss, your spouse, your family, a friend, a stranger, waiting in lines, bills, the economy, the cost of something, or the service of a company, you are not being grateful and you're pushing your dream life further away with every complaint. Now you understand that complaining negative thoughts and words and taking things for granted stops the good things in your life. Now you understand that when something goes very wrong, you have unintentionally not been grateful enough. It's impossible to be negative when you are grateful. It's impossible to criticize and blame when you're grateful. It's impossible to feel sad or have any negative feelings when you're grateful. And the best news is that if you have any negative situation in your life currently, it won't take a long period of time to transform things with gratitude. The negative situations will disappear in a puff of smoke, just like magic. First, as difficult as it may be, you have to look for things to be grateful for in the negative situation. No matter how bad things are, you can always find something to be grateful for, especially when you know that your gratitude will magically transform every negative circumstance.
Walt Disney, who knew about the true magic of life, showed us how to do this in his movie Pollyanna. Disney's 1960 movie Pollyanna featured the Glad Game, which had a profound effect on me when I was a child. I played the Glad Game featured in the movie through my childhood and adolescence. To play the glad game, you look for as many things as you can to be glad about, especially in a negative situation. Finding things to be glad about or finding things to be grateful for in a negative situation makes the solution appear. Walt Disney demonstrated the magical power of gratitude in Pollyanna, and thousands of years earlier, Buddha demonstrated the way to say the same magical power when he said, I quote, let us rise up and be thankful, for if we didn't learn a lot, at least we learned a little. And if we didn't learn a little, at least we didn't get sick. And if we got sick, at least we didn't die. So let us all be thankful. Unquote. Gautam Buddha, circa 563 BC to 483 BC, founder of Buddhism. Let Buddha's words be your inspiration. And today, take one problem or negative situation in your life that you must want to resolve and look for 10 things to be grateful for. I know it can be challenging to begin this practice, but Buddha is showing you the way to do it. Make a written list of 10 things on your computer or in your gratitude journal. As an example, your problem might be that you're out of work and despite your best efforts, you're still unemployed. To magically turn this situation around, you have to do a concentrated practice of gratitude on the situation. Here are some examples what you might say. Point number 1, I am so grateful to have had more time for my family during this period. 2, I am grateful for that my life is in a lot better order because of the spare time I've had. Number 3, I'm grateful that I've had a job most of my life and that I am experienced. Number 4, I am grateful that this is the first time I've been unemployed. Number 5, I'm grateful that there are jobs out there and more new jobs are appearing each day. Number 6, I am grateful for all the things I've learned in applying for jobs and in going for interviews. Number 7, I'm grateful that I have my health and that I can work. Number 8, I'm grateful for my family's encouragement and support. Number 9, I'm grateful for the rest I've had because I needed it. Number 10, I'm grateful that through losing my job, I've realized how much having a job means to me. I had never realized that until now. As a result of the unemployed person's gratitude, they will attract different circumstances and their current situation must and will magically change. The power of gratitude is greater than any negative situation, and there are unlimited ways that the negative situation can change. All you have to do is practice gratitude and watch the magic take place. Let's take another example. A son whose relationship with his father is troubled. The son feels that no matter what he does, it never seems to be good enough for his father. Number 1, I am grateful that most of the relationships in my life are really good. Number 2, I am grateful to my father for working hard so that I could have the education that he didn't get to have. Number 3, I am grateful to my father for supporting our family through my childhood because I didn't have a clue then how much hard work and money it took to keep our family going. Number 4, I am grateful to my father for taking me to basketball
every Saturday when I was a child. Number 5, I am grateful that my father is not as tough on me these days as he used to be in the past. Number 6, I am grateful that my father cares so much about me because he wouldn't be tough if he didn't care so much. Number 7, I am grateful that through my relationship with my father, I have learned to have compassion and a great understanding with my children. Number 8, I'm grateful to my father for showing me how important encouragement is in raising happy, confident children. Number 9, I'm really grateful when I get to laugh with my father. Some people never got to do that because they didn't have a father. And for others who have lost their father, they will never have the chance to laugh with their father again. Number 10, I'm so grateful that I have my father because amid the tough times, there have been good times and there will be more good times ahead with my father. As a result of the son's heartfelt feelings of gratitude for his father, he will change their relationship for the better. The son changed the way he thinks and feels about his father, which immediately changes what he attracts from his father. Even though the son was being grateful in his mind, at an energetic and quantum level, the son's gratitude will have a magical effect on his relationship with his father, provided he maintains his gratitude by the law of attraction. The son must receive far better circumstances with his father, and their relationships must begin to improve immediately. Remember, you can tell your gratitude is working by the way that you feel. You should feel a lot better about the situation after practicing gratitude. The first evidence of gratitude's magical power working is your feelings lifting. So, when you do feel better about it, you know the situation will improve and the solutions will appear. The answer to any negative situation you want to resolve is to focus concentrated gratitude on it until you feel better inside. Then you will see the magic work. Its wonder in the outside world. In making your written list, make sure you list each of the 10 things you're grateful for in the following way. I am so grateful for dash, or I am truly grateful for dash, and finish the sentence with what you are grateful for. You can also use Walt Disney's ways of using gratitude's magical power if you find it easier. I am so glad that dash, and finish the sentence with what you're glad about. Once you've listed 10 things you're grateful for, finish the magical way out of negativity. Practice by writing thank you, thank you, thank you for the perfect resolution. And just for today, see if you can get through one day without saying anything negative. It may be a challenge, but see if you can make it through one day. There is an important reason to do this because most of us have no idea how much we speak negatively, but you'll have an idea after watching your words for a day. Remember that negativity and complaint bring more of those things. And if you are aware of what you are saying, you can stop and decide if you want the consequences of what you are about to say. Here is a magic lifeline you can use if you notice yourself thinking or saying something negative. Stop immediately and say, but I have to say that I'm really grateful for dash. Finish the rest of the sentence with something, anything that you're grateful for. Take this magic lifeline with you and grab a hold of it whenever you need it. And if any little problem or situation appears in the future, remember
to put out all the embers with gratitude before it grows into a fire. At the same time, you will ignite the magic in your life. Magic practice number 7. The magical way out of negativity. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list and at the end of each blessing say thank you, thank you, thank you and feel as grateful for that blessings as you can. Number 2, choose one problem or negative situation in your life that you most want to resolve. Number 3, list 10 things that you're grateful for about the negative situation. Number 4, at the end of your list, write thank you, thank you, thank you for the perfect resolution. Number 5, just for today, see if you can get through one day without saying anything negative. If you notice yourself thinking or saying something negative, use the magic lifeline. Stop immediately and say, but I have to say that I am really grateful for dash. 6. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words. Thank you for the best thing that happened during the day. Yeah, Thank you, thank you ma'am. so much, Aarti. Thank you so much. Thank you. So this is about the dark domain of our life, जो थोड़ा सा dark या gray area of our life है, जिसमें हमको embers, because what we need to really understand for people who are very new here on the platform या YouTube पे बहुत family बढ़ती जा रही है, तो YouTube पे जो सुन रहे हैं, gratitude word जो thank you word होता है, या अगर हम बोलते हैं या सोचते हैं, I am grateful for this. I'm so grateful to my vision because मुझे इससे सब कुछ दिखता है. I can appreciate, I can keep myself safe, I can admire, I can make out the difference between day and night. I can see the food that I'm eating. Isn't it? अगर आपने इतना भी लिखा है तो दिल में ग्रैटिट्यूड जागता है ना, उस एनर्जी की वजह से हमारा ऑरा, हमारा मतलब हमारा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है हमारे अराउंड, वो एक्सपैंड होने लग जाता है। और जैसे इसमें लिखा है कि फादर एंड सन के बीच में, मतलब सन को अपने फादर से कुछ, वो डार्क एरिया था उनकी लाइफ का, दोनों की आपस में बनती नहीं थी। सो द सन हैड रिटन 10 कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड फॉर हिज फादर. Okay, so when he did that, after that, his own energy changed, and by the law of attraction means whatever energy and frequency you are vibrating in, you will attract only that from the other person. Okay, the same person whom we call as nasty becomes like an angel when we change our energy. So it's not that वो इंसान change हो रहा है, चेंज आपके अंदर आया है ना, हम चेंज हो रहे हैं, हमारे अंदर वो बदलाव आया है, बिकॉज हमने ग्रैटिट्यूड में कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड लिखा था। 10 पॉइंट्स लिखना, और इसमें सोच सोच के लिखना पड़ेगा, बिकॉज ये आपका वो वाला एरिया है जहां पे बहुत कंप्लेन्स हैं, जहां पे बहुत ज्यादा कंप्लेन्स हैं। नेगेटिव एरिया का मतलब होता है जहां पे बहुत ज्यादा कंप्लेन्स हैं कि मेरे डैड ने ये किया, मेरे डैड ने मुझे प्रॉपर्टी नहीं दी, मेरे डैड मेरे भाई को ज्यादा फेवर करते हैं, मेरे डैड ने ये नहीं किया, मुझे ऐसे नहीं करने दिया, मुझे ये करियर परस्यू करना था, मेरे डैड ने ये नहीं करने दिया, मेरे डैड को मेरी कोई बात पसंद नहीं आती है, मैं उनके लिए जान भी दे दूं तो मेरे डैड मेरे he does not appreciate me. I do this, my dad is like that, my dad is this, my dad is that. So this son was full of complaints for his father, because of which multiple areas in the son's life must be going wrong, literally. Because one relationship issue will start affecting all the other relationships also. So the son wrote 10 concentrated gratitude for his father. Okay, so now that means sun की energy has shifted, है ना, sun की energy shift हो गई, उसके कारण the son will see the evidence in the father's behavior now being very different. उसने अपने फादर से कोई बात नहीं की, फादर को पता भी नहीं है that उसने 10 blessings लिखी थी खुद ने, कि बेटे ने 10 blessings लिखी थी, father doesn't even know about it. Okay, maybe he even lives in the other city and all they were doing is arguing over the phone all the time at the drop of a hat. राइट, दिस इज द रीजन सन को लिखने की जरूरत पड़ी ना, क्योंकि हो सकता है बहुत आर्ग्यूमेंट चल रही होंगी उनके अपने फादर के साथ में,
तो अब सन ने क्योंकि 10 ब्लेसिंग्स लिखी और उसको 10 ब्लेसिंग्स, इसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड। कभी भी लाइफ में कोई दिक्कत आ रही है, फटाफट, मैं बहुत करती हूँ ये वाली प्रैक्टिस, कभी भी कुछ होता है, कोई इशू जो मुझे बॉदर कर रहा है, आई जस्ट डीप ब्रीथ फर्स्ट, है ना, मैं सिर्फ सांस लेती हूँ, गहरी लंबी सांस है, एब्डोमिनल ब्रीदिंग, एंड देन आई राइट दीज 10 पॉइंट्स। और 10 पॉइंट्स लिख के एंड में यू जस्ट नीड टू राइट थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन, सबसे परफेक्ट समाधान के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 3 बार थैंक यू लिखने का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन स्टार्ट्स, बिकॉज 3 इज अ नंबर ऑफ क्रिएशन। ओके, ये बहुत साइंटिफिक मतलब ये सब होती है प्रैक्टिसेस। इट इज ओनली अबाउट, हर प्रैक्टिस के बारे में हम देखेंगे वो हमारे क्वांटम फिजिक्स को सिग्निफाई करती है। क्वांटम फिजिक्स का मतलब होता है कि हमारे एटॉमिक लेवल पे इस वक्त हमारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं, व्हाट इज द मूवमेंट लाइक, आर दे वाइब्रेटिंग इन अ वेरी डिस्टर्ब मैनर एंड इरेटिक फैशन, क्योंकि वो बहुत ऑर्डरली ब्यूटीफुल वे में ऑर्बिट कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, तो सब कुछ इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट पे डिपेंड करता है। जैसे हम अपनी, क्वांटम का मतलब होता है सबसे सूक्ष्म कण हमारी बॉडी का, विच इज कॉल्ड एज एटम। सो अगर एटॉमिक लेवल पे अगर हमारे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हमने ऑर्गेनाइज कर दिया है, एलिप्टिकल कर दिया है, चेंज कर दिया है और ऑर्डरली कर दिया है, वो ग्रैटिट्यूड और लव की एनर्जी से होता है, एक्साइटमेंट की एनर्जी से होता है, हैप्पीनेस की एनर्जी से होता है, जॉय की एनर्जी से होता है, अप्रिसिएशन की एनर्जी से होता है। जब हम इस जोन में होते हैं तो हमारे ऑर्बिट करने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे स्टार्ट ऑर्बिटिंग इन अ वेरी डिफरेंट फैशन। और कलेक्टिवली, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं हेड टू टो, ऑब्वियसली, है ना, सो उसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा, उसकी एनर्जी चेंज हो जाएगी और अब हम अलग फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करना शुरू करेंगे, जस्ट बाय राइटिंग दीज 10 ब्लेसिंग्स। And by the law of attraction, this energy was very focused, isn't it? It was focused towards one area. It was focused towards relationship with a particular person. In this case, in the example that we saw, it was father and son. So the son wrote 10 blessings for his father. Okay, so it was a focus energy. So wherever energy focuses, what kind of energy is focused on that thing, that area expands, amplifies. मतलब जहां पे भी हम एनर्जी को फोकस और कॉन्सेंट्रेट करते हैं, और वो एनर्जी, वो भी ग्रैटिट्यूड की एनर्जी, विच इज अ वेरी हाई वाइब्रेटिंग, हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी, we will see the evidence of it, because अब उस पर्सन का सन का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑरा ही डिफरेंट हो गया। जो ऑरा जो वर्ड हम यूज करते हैं, दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अराउंड यू। Okay, and according to the quantum physics, whatever energy you're vibrating at is what you attract in your life. If you're vibrating at a very high frequency energy, you will start attracting things of very high frequency in your life. Everything is matching a frequency. So it is very important for us to take accountability of everything in our life. If I'm not receiving money, chappar faad ke, take accountability of that in your life. That, okay, how do I do it? How do I change that? I'm responsible for it. If I'm the cause, everything becomes so easy. If other person is the cause, जैसे अगर कोई दूसरा, अगर हमें ये लगता है कि कोई और इंसान है जिसकी वजह से हमारी जिंदगी में छप्पर फाड़ के पैसे नहीं आ रहे, तो हम उसको ब्लेम कर रहे हैं ना कि उसकी वजह से पैसे नहीं आ रहे, वो मेरा पैसा नहीं दे रहा, वो क्लाइंट ऐसा है, बहुत बेकार है, बहुत ऐसा है, उसकी जेब से पैसे नहीं निकलते, तो it will not work. This science, that means that you are complaining. Complaining is literally about 100 megahertz frequency, very very low. सो उस जोन में जब आप रहोगे 100 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की एनर्जी में, आप बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन सारी वो चीजें अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे जो उस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करेंगी। इट विल मेक यू कंप्लेन मोर। somebody will come and the press wala will come and burn your favorite dress. Now again you will say, देखो मेरी ड्रेस बर्न कर दी, मेरी इतनी महंगी ड्रेस थी, मेरा ये हो गया। आपने अपने बालकनी में कपड़े सुखाए, वो गिर जाएगा, वो वो कहीं इधर उधर लॉस्ट हो जाएगा, कोई उठा के ले जाएगा, आप बोलोगे देखो इतने अच्छे से कपड़े सुखाते नहीं है मेरे घर में, जिसने भी सुखाया था और वो कपड़ा उड़ के चला गया, वो अब है ही नहीं वहां पे, आई हैव लॉस्ट दैट ड्रेस परमानेंटली, है ना, इस तरह की चीजें होने लग जाएगी। एंड
मल्टीपल अदर थिंग्स, मे बी सम, आप कंप्यूटर पे काम कर रहे होगे, आपने बहुत अच्छा वर्ड फॉर्मेट में अपना कोई कंटेंट बनाया और वो उड़ जाएगा सडनली, यू विल स्टॉप टू सेव इट, या कंप्यूटर बंद हो जाएगा, लैपटॉप बंद हो जाएगा, उसमें बैटरी खत्म हो जाएगी और वो सेव ही नहीं हो पाएगा। अब आप उसको रिट्रीव नहीं कर पा रहे हो वापस से, जबकि यू हैड रियली स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम राइटिंग दैट कंटेंट। So these kind of problems will come when you're vibrating in the frequency of complaint. That so and so person that did this and this person does not give my money. इस person का blame है, उसने ऐसे किया है. So that is not the idea. In this world of gratitude and in this journey of gratitude, हमारा mindset बहुत अलग होना चाहिए. हम सबके पास उतना ही है जितना हमने डिजर्व किया है. ठीक है, तो अपना डिजर्विंग कैपेबिलिटी को बढ़ाओ. सामने वाले को बोल के, सामने वाले से एक्सपेक्ट करके चीजें करने का कोई फायदा नहीं है. इट इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम एंड इट इज ऑल्सो रिड्यूसिंग योर फ्रीक्वेंसी. ओके, इस वक्त वट एवर वी हैव इज वॉट वी डिजर्व्ड. जितना बड़ा हमारा वेसल था उतना हमको मिला हुआ है. हाँ, वो थोड़ा स्मॉल वेसल है, दैट इज बिकॉज यू आर होल्डिंग अ स्मॉल वेसल mentally. Okay, so to increase the size of the vessel and to make it as big at the sea, you have to vibrate in the energy and frequency of love and gratitude. And we don't have a choice. If we want life to flow into us in the fullest degree, in the fullest form, in the most supreme state, we need to elevate our vessel. That means our energy. क्वांटम फिजिक्स वाली जो मैंने आपको बात बताई थी, दैट हमारे एटॉमिक लेवल पे हमको अपनी ऑर्बिट जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं उनकी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी और उनको बहुत ऑर्गेनाइज और एलिप्टिकल मैनर में लाना पड़ेगा. वो तभी होगा जब जॉय, लव, एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस, ये सारी चीजों इस फ्रीक्वेंसी में जब हम वाइब्रेट करेंगे. तो लाइफ में देयर आर moments when we are not able to vibrate in a very high frequency, isn't it? I mean, this might be the question I would have asked. दैट हमेशा तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप खुश रहो, हमेशा तो आप इस एनर्जी में वाइब्रेट नहीं कर सकते. फिर क्या करें? ऐसे में आपको डेलिबरेटली टेक अ स्टेप फॉरवर्ड. ओके, मेहनत करके टेक अ स्टेप फॉरवर्ड. दिल में गुस्सा आ रहा होगा, दिल में इरिटेशन हो रही है, दिल में ऐसा लग रहा है आई फील लाइक क्राइंग एंड यू फील वेरी हेल्पलेस, यू फील रियली बैड, इंसल्टेड, ह्यूमिलिएटेड और एनीथिंग फॉर दैट मैटर. ओके, या कुछ किसी चीज का लॉस हो गया है, कोई आपका आउटफिट खो गया है, कुछ भी हो सकता है ना, किसी भी मटेरियल चीज का आपका कुछ हो गया है. यू डोंट हैव टू वरी. आपको उतना ही मिला है जितना आपने काम किया हुआ है अपने ऊपर. दैट्स वेरी वेरी क्लियर. ठीक है, तो अपने ऊपर काम कर लो, क्योंकि जितना अभी तक काम किया था, मिलियंस ऑफ लाइव्स, मतलब अगर कितने जन्मों का नेगेटिव कर्मा, नेगेटिव एनर्जी आप एक सेकंड में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो इस जन्म में. ठीक है, ये साइंस बोलती है, ये बुद्धा ने बोला था, गौतम बुद्ध ने. Millions of eons of the kalpas of the suffering can go away in a single fraction of a second. The moment you shift your energy. Because इसीलिए कहते हैं पावर ऑफ नाउ. पावर ऑफ द पास्ट कभी पढ़ी है आपने किताब? कभी नहीं होती ना, किसी ने पढ़ी नहीं होगी, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है. देयर इज नो पावर इन द पास्ट. द पावर इज ओनली इन द नाउ. वाई? बिकॉज आप पास्ट को भी न्यूट्रलाइज कर पा रहे हो उस चीज से, प्रेजेंट से. दैट इज द पावर ऑफ नाउ. Because of now, you are able to cover up and you're able to put a lot of light in your past. And with the power of now, you can create a beautiful future. Because the future is getting created. Future is not destined. It's not predestined. Okay? Future is getting created by you now. That's why they say that all the power lies in the now. Now what frequency you're vibrating at right now, ये आपका decide कर रहा है कि आपका future कैसे होगा. ठीक है, सो देर इज नो पावर इन द फ्यूचर एंड देर इज नो पावर इन द पास्ट. हेंस वरिंग का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि पास्ट तो पास्ट है, पास्ट इज अ बायगॉन, दोबारा मुड़ के तो कभी आएगा नहीं. लेकिन हम उसको अलाइव रखते हैं जबरदस्ती. कभी कभी हम स्ट्यूपिड बिहेव करते हैं. ठीक है, हम अलाइव रखते हैं अपने पास नेगेटिव पास्ट को, हम अभी भी जिंदा रखते हैं. अच्छी चीजों को जिंदा रखना बहुत अच्छी बात है. अगर कोई भी चीज आपके चेहरे पे स्माइल लेके आती है, गिव्स यू अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस इन योर हार्ट, मेक्स यू फील सो गुड, सो वर्दी, सो हैप्पी, कंटेंट, एंड लाइक अ विनर,
anything from the past, you can think of that. That's not a problem because it is elevating your aura, your electromagnetic field. But if it is a negative thing you're bringing back again and again, revisiting your past, जिसको बोलते हैं डॉक्टर जो डिस्पेंजा, he always talks about do not revisit your past. Past is a past. It is gone. Whatever was there till a second ago is called the past. Okay? Don't bring it back into the present. You don't need to do that. If it is giving you happiness, making you feel worthy, go ahead and do it. But if it is making you feel bad, then don't revisit your past. Look only towards your present, because past को आप present में लाके आप अपना future भी खराब कर रहे हो, because present की energy के कारण अगला moment decide हो रहा है. अगर मैं इस वक्त 108 blessings लिख रही हूँ, thank you universe, thank you universe, I love you, thank you universe, I love you. Thank you, universe. 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 I love you. I'm just repeating this like a parrot. So ये chant हो गया ना, mantras वही होते हैं ना जो बार बार आप repeat करो. So अब आपने बीज बो दिए, मंत्र बीज 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 मंत्र बोलते हैं हम ना mantras को हिंदुस्तान में. तो बीज मंत्र है, तो बीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपने बीज बो दिया है अपने फ्यूचर के लिए. अब वहां पे पेड़ उगेगा आपके मंत्रा के हिसाब से. आपने बोला भी क्या था? थैंक यू यूनिवर्स, आई लव यू. ओके, अब ग्रैटिट्यूड और लव का पेड़ उगेगा फ्यूचर में, क्योंकि बीज मंत्र डाला आपने और आपने खुद का बीज मंत्र बनाया जो बहुत अच्छा बीज मंत्र है ना. इस तरह से. तो इसीलिए आज वाली जो प्रैक्टिस है ना, जिसमें हम अपना नेगेटिव डोमेन ढूंढ रहे हैं, इसको हम प्रेजेंट में लेके आ रहे हैं. और चाहे हमने डैडी के साथ कितना भी झगड़ा किया, कुछ भी उन्होंने हमारे लिए किया, कुछ भी वो बायस्ड है आपके बहन की तरफ, आपके भाई की तरफ, आपको नहीं, उन्होंने आपके साथ हमेशा आर्ग्यूमेंट की है, आपको सपोर्ट नहीं किया, हमेशा ये कहा है कि तुम निकम्मे हो, या ना, चाहे ऐसी चीजें होती रहती हैं इंडियन हाउस होल्ड में, कोई बात नहीं, जो भी बोला, ठीक है. हमें, हम उसका कॉज थे, अभी भी हम ही उसका कॉज हैं. उनको कंप्लेन देने से कोई फायदा नहीं होगा. हम कॉज थे और हम ही समाधान निकालेंगे उसका. सो वी आर द रीजन एंड वी आर द सोल्यूशन. Okay, so we will write 10 points about father, that I'm so grateful to my father for giving me, for educating me so much that I have such a good, respectable work. And I feel so, like I'm so blessed to be having this qualification. I'm so grateful to my father that all his life he got fruits, vegetables, and even wanted to, give me the best food of my choice. I'm so grateful to my father that because of him, I could actually learn to play badminton and football. And, sometimes even he would drop me to the football and to the badminton court. I'm so grateful to my father, for getting me the clothes that I wanted every time when I wanted to buy. So I'm so grateful to my father that all his life he's gone to office and he's earned, even in the days when he was not well, even the hard days, he would go to work and he would get the money, and the family was surviving so well. We had everything. So this is what you need to write. अब ये सारी चीजें दे 10 पॉइंट लिखने के बाद एंड में लिखना है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन. इसका मतलब सबसे अच्छे समाधान के लिए आपने 3 बार थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भी बोल दिया. और क्योंकि आज हम नेगेटिव चीज डोमेन में हम बहुत लाइट लेके आना है हमको, है ना. वी आर लुकिंग फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन, परफेक्ट सोल्यूशन फॉर दैट, जो भी हमारा इशू चल रहा है अभी. तो इसलिए आज के दिन हम कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलेंगे. Let's put it the other way. On the flip side of not speaking negative is being very appreciative throughout the day. Okay, so let's not even use that word that हम कुछ negative नहीं बोलेंगे. आज पूरा दिन हम appreciative रहेंगे, पूरे दिन appreciative रहेंगे, चाहे कैसी भी चीज हो रही हो. अगर कोई बहुत चिल्ला रहा है ना, तो हम उसकी आवाज के लिए appreciative होंगे कि वाह क्या बुलंद आवाज है. ठीक है, इस तरह से आज हमें पूरे दिन appreciative रहना है. 10 पॉइंट्स लिखने के बाद 10 पॉइंट्स तसल्ली से बैठ के लिखना जब आपके पास थोड़ा टाइम होगा. यू डोंट हैव टू डू इट इन अ हरी. दिस इज नॉट अ हरी प्रैक्टिस. ओके, बिकॉज दिस इज गोइंग टू शिफ्ट समथिंग बिग इन योर लाइफ. तो इसलिए आपको अपना बहुत एयर टाइम इसको देना पड़ेगा और 100% अटेंशन देनी पड़ेगी. यू कैन डू इट इन द मॉर्निंग, यू कैन डू इट इन द आफ्टरनून, यू कैन डू इट इन द इवनिंग. दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल. आज वाली प्रैक्टिस सुबह की करने वाली प्रैक्टिस नहीं है. However, I will do it immediately after the session right now only, because सुबह एक बार कर लो अच्छे से तो हो जाती है, नहीं तो बाद में स्ट्रगल रहता है थोड़ा टाइम निकालने का, है ना. सो हम इसको कर लेंगे, किसी भी टाइम करने की प्रैक्टिस है. अच्छे जोन में रह के करना, बिकॉज अच्छे जोन में अच्छी चीजें याद आती है. नेगेटिव जोन में सिर्फ नेगेटिव चीजें याद आती है, बहुत मुश्किल होता है अच्छी चीजें याद आना,
है ना, क्योंकि फाइट एंड फ्लाइट मोड में जब आप होते हो तो आपको अच्छी चीजें कभी भी नहीं याद आएगी, बिकॉज बॉडी सर्वाइवल मोड में होती है उस वक्त। जस्ट मीन्स टू एन एंड करना है, जैसे बॉडी स्ट्रगल कर रही होती है। तो इसीलिए इसको आराम से, व्हेन यू आर एट ईज, दैट इज व्हेन यू नीड टू राइट दीज 10 पॉइंट्स। और उसके बाद पूरे दिन भर में, सेकेंड प्रैक्टिस आज की ही है, तो पूरे दिन भर में हमको अप्रिशिएटिव होना है ना। पूरे दिन, छोटी बड़ी कैसी भी, कितना भी किसी ने कुछ अच्छा किया, आपको बुरा लग रहा, आपको कुछ लग रहा, आपको धूप लग रही है, आपको बहुत बारिश आ रही है वहां पे, आपको जैसा भी लग रहा हो, ठीक है, आपको चिड़ियों की आवाज से परेशानी हो रही है, आपको कोई डिस्टर्ब कर रहा है, आपका कोई काम पूरा नहीं हो रहा है, आपको ऑफिस से कोई प्रेशर लग रहा है, पूरे दिन अप्रिशिएटिव रहना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट। आई एम सो ग्रेटफुल टू माई वर्क। जैसे ही कुछ होता है ऑफिस में, आपको लग रहा है कोई काम आ गया और यू डोंट हैव दैट बैंडविड्थ टू डू दैट वर्क, सो उस वक्त आप बोलो दैट thank you for my office, and thank you for all the money that I get from office, thank you that I have a job, thank you for the wonderful job. This is what we have to say instead of like complaining in that area. And this is what we need to do throughout the day today, because आज पूरे दिन हमको appreciative रहना है, ठीक है, ये भी है। और ऑफ कोर्स अगर हमारे मुंह से गलती से, या हमारे मन में हमारे वर्ड्स में, या हमसे कुछ गलती हो गई, आज सपोज हमने कंप्लेन कर दी, है ना, विदाउट रियलाइजिंग कि व्हाट इज दिस पर्सन ऑलवेज बिहेव्स लाइक दैट, सपोज अगर ऐसे किया, या आपने डोमेस्टिक हेल्पर के बारे में बोल दिया दैट हमेशा लेट आती है, इसको समझ में नहीं आता, समथिंग लाइक दैट, है ना, कोई भी चीज नेगेटिव ही हुई है एक तरह से, तो इमिजिएटली वी नीड टू यूज अ लाइफ लाइन। बट आई मस्ट से दैट 24 दिन तो आती है ना महीने में इस तरह से, that she 24 days she comes, my domestic helper, and she makes the work so easy. I mean, she cleans the utensils, she does the cleaning work, she does the dusting work, that way. So we have to look for a lifeline, look for something positive in that area of your complaint. Okay, like if you've been walking and then you feel that the air is very heavy and it's very polluted or whatever, and because of which that's bothering you. सो जैसे ही किसी ने बोला और आपने भी पार्टिसिपेटिव होके उसको अच्छी बात नहीं की हवा के बारे में, वैसे ही आप अपने मन में सोचो, थैंक यू टू द मैजिकल एयर दैट आई ब्रीथ बिकॉज यू कीप मी अलाइव, है ना। जो एयर जिंदा रखती है उसके लिए आपने कंप्लेन की है, तो कितनी बड़ी गलती की है ना, कितना नेगेटिव कर्मा किया है आपने। सो इसलिए लाइफ लाइन यूज कर लो इमिजिएटली। ये है बस आज की प्रैक्टिस। तो 3 प्रैक्टिसेस हुई टोटल। एक तो यू हैव टू फिगर आउट दैट आपका लाइफ का कौन सा एरिया सबसे ज्यादा गलत चल रहा है। देयर माइट बी 2 or 3 एरियाज, बट आप देखो कि कौन से एरिया में आपको इमिडिएटली डिफरेंस लाने की जरूरत है। उस एरिया के बारे में कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड लिखने 10 विद द लैंग्वेज आई एम सो ग्रेटफुल, मैं बहुत शुक्रिया करती हूँ अपने पिताजी का या जो भी जॉब का, जिसके कारण हर महीने के एंड पे मेरे पास पैसे आते हैं। ठीक है, ये इसलिए क्योंकि आपके जॉब में हो सकता है कुछ इशू चल रहा है, तो आपका वो अंधेरे वाला एरिया, डार्क एरिया चल रहा है और ग्रे एरिया चल रहा है, उसमें आपको बहुत ज्यादा इल्यूमिनेशन लेके आनी है। तो आप अपने जॉब के बारे में लिखोगे। अगर आपके बिजनेस में दिक्कत आ रही है and you feel that you're struggling in your business, then you have to do this practice. You have to write 10 blessings for your business. ओके, बिजनेस के लिए लिखो। जो क्लाइंट अभी तक, आई एम सो ग्रेटफुल दैट मेरा अपना खुद का काम है, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट मैं अपनी मर्जी से ऑफिस जा सकता हूँ और मर्जी से वापस आ सकता हूँ। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरे ऑफिस में 2 लोग काम करते हैं। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरा ऑफिस का एक अपना मतलब एरिया है जहाँ से मैं ऑफिस का वर्क ऑपरेट करता हूँ। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ दैट मेरे ऑफिस में सफाई करने वाला कोई है। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पास 4 क्लाइंट पूरे महीने में इंक्वायरी किए, जो मेरे प्रोबेबल प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स हैं। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरा अपना करेंट अकाउंट है कंपनी का। इस तरह से आपको 10 ब्लेसिंग्स निकालनी है, बिकॉज अपनी क्वांटम फील्ड की एनर्जी चेंज करना हमारा काम होता है। ठीक है, किसी और पैसे नहीं दे रहा, वो उसकी प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी प्रॉब्लम है। हमने अट्रैक्ट किया हुआ है वो सिचुएशन को, इसीलिए हम अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं। सो टेक अकाउंटेबिलिटी ऑफ वॉट एवर इज गोइंग ऑन इन योर लाइफ विदाउट एक्सपेक्टिंग द अदर पर्सन टू डू इट। ओके, दैट इज वन थिंग दैट वी नीड टू लर्न। और ये जब किया हमने, फिर पूरे दिन हमको अच्छे जोन में रहना है, अप्रिशिएटिव मोड में रहना है। और तीसरी प्रैक्टिस आज की है दैट अगर हम हमारे मुंह से या हमारे विचार में
कुछ गलत चीज आ गई, समथिंग दैट वी शुड नॉट हैव स्पोकन विच इज नेगेटिव, वी इमीडिएटली नीड टू रिप्लेस इट, बट आई मस्ट से दैट दिस, है ना। सपोज किसी फ्रेंड के बारे में बुरा लगा, लेकिन बट आई मस्ट से दैट वो मेरी इतने टाइम से फ्रेंड है। बहुत बहुत बड़ी चीज होती है जिनकी लंबे रिश्ते होते हैं, बहुत बड़ी चीज होती है। सबके जिंदगी में नहीं होता, सबकी जिंदगी में रिश्ते आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते होते हैं जो बहुत सालों से चल रहे हैं, है ना। देयर इज अ रीजन, अप्रिशिएट दैट। और वो कभी टूटते नहीं है। ऑफ कोर्स उनके कभी कभी ग्रे एरियाज हर चीज में आ जाते हैं, घर वालों के साथ भी आ जाते हैं, मॉम डैड के साथ भी आ जाते हैं, कभी आर्ग्यूमेंट होती है और वो सारी चीजें, लेकिन लंबे रिश्ते तो इमिजिएटली रिप्लेस करो उसको। बट आई मस्ट से दैट दिस, ये प्रैक्टिस है ना। तो ये वाली जो चैप्टर आज का शुरू हुआ था, ये बहाउल्लाह की कोट से हुआ था, ग्रेटफुल पर्सन इज ग्रेटफुल अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू मेक अ बीइंग, that a grateful person is grateful under all circumstances। वो चूज नहीं करता कि मेरी जिंदगी में ये होगा तो मैं ग्रेटफुल होंगी, मेरी जिंदगी में ये होगा तो मैं ग्रेटफुल होंगी। ग्रेटफुल पर्सन इज ग्रेटफुल फॉर द सनशाइन, ग्रेटफुल पर्सन इज ग्रेटफुल फॉर दैट pink flower that he sees on the side path। A grateful person will see that wow, there is a street lamp, it is looking so beautiful। A grateful person will say that wow, such a nice concretized road that I'm driving in, I mean it's really amazing। The grateful person will say thank you to the flyover because it is वो सिग्नल फ्री एरिया होता है, मतलब फ्लाईओवर के ऊपर से जाना, मतलब वो ट्रैफिक सिग्नल क्रॉस करके मतलब वो जाना होता है, वहां पे होता ही नहीं है, सो वो जल्दी आपको पहुंचा देता है। ग्रेटफुल पर्सन जो भी खाना घर में बनाया है उसके लिए ग्रेटफुल होता है, ये नहीं बोलता कि मुझे लौकी पसंद नहीं है, मुझे वो पसंद नहीं है, कितनी बेकार सब्जी है, रोटी कितनी टाइट है, पता नहीं हार्ड है, जो भी, ये चावल में नमक कम है, उसमें ज्यादा है, वो कैसा बेकार खाना बनाते हैं, ऐसा ये सब नहीं। ग्रेटफुल पर्सन इज ग्रेटफुल अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, ठीक है। दैट इज वन थिंग। और बाहुला का मैंने इस बार आपको पिछली बार पूरा कोड बताया था, और उसमें है द कंप्लेनिंग पर्सन इज कंप्लेनिंग इवन इफ ही लिव्स इन पैराडाइज, ठीक है। ये उसका पूरा फुल फॉर्म है इस वाली कोड का। मतलब इसमें से सिर्फ रॉन्डा बर्न ने एक लाइन उठाई है, बट फुल ये है दैट अ कंप्लेनिंग पर्सन विल बी कंप्लेनिंग इवन इफ ही लिव्स इन पैराडाइज। ये भी बाउला ने लिखा है इसी कोड के साथ में। So that is who. So we have to be careful about everything that we do, because everything is about us. Everything is us. I, me, myself. I'm the Govind. I'm the God of my life. Govind is Brahman ka Bindu. वो आप you. And you have all the power to make a difference to your life, not just your life, to the whole world. You can make a life. You can make a difference to million lives. You can make a difference to million lives. That is the power that lies within the human mind, 95% सबकॉन्शियस माइंड, बट वी डोंट यूज इट। ओके, हम लोग वो 5% को यूज कर करके ही खुश होते रहते हैं। वो बहुत फ्लीटिंग चीजें होती हैं क्योंकि वो परसेप्शन से आती हैं, 5 सेंसेस से। बट सबकॉन्शियस माइंड में जो पावर है उसको यूटिलाइज करके अपनी पूरी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करने की पावर हमारे अंदर है। और वो पावर बार बार रिसीड हो जाती है जब हम गलती अगले में देखते हैं, ठीक है। सो वी विल टेक अकाउंटेबिलिटी ऑफ आवर लाइफ, एंड वी विल डिटरमिन दैट फ्रॉम नाउ आई विल बी दैट पर्सन हु इज फाइंडिंग, हु इज नॉट टेलिंग व्हाई डिड दिस सिचुएशन। कोई भी सिचुएशन आपकी जिंदगी में आई है, यू आर द रीजन, लुक इनटू योरसेल्फ, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। चाहे कोई आप पे चिल्ला रहा है, रीजन आप ही हो। कुछ है आपके अंदर, आपने कभी ना कभी कुछ ऐसा किया है, आपने चिल्लाया है अनरीजनेबली किसी पे कि आपको आज दोबारा उसका सुनना पड़ रहा है, ठीक है। सो इमीडिएटली यू हैव टू शिफ्ट योर एनर्जी, यू डोंट हैव टू ड्वेल इन दैट एनर्जी, दैट इज व्हाट इट इज अबाउट, ठीक है। और सुबह काउंट माई ब्लेसिंग्स, रोज सुबह जब हम उठते हैं हम 10 ब्लेसिंग्स लिखते हैं, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में लिखते हैं, मजा आता है बहुत। अपने 10 ब्लेसिंग्स निकालते हैं कि क्या चीजें हमारी जिंदगी में है जिसको हमने फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है, लेकिन उनके लिए अब हम थैंक यू बोलेंगे, isn't it? जैसे ये साइड टेबल ही मेरे साइड में है, इसमें हमेशा मेरा ये सन चार्ज वाटर रखा हुआ होता है, जो 1 घंटा धूप में रख के ब्लू बॉटल में रख के विद अ कॉक, यू नो ऐसा। अगर ये टेबल नहीं होती तो मुझे ये फ्लोर पे बार बार झुक झुक के पानी रखना होता। इसमें मेरा ग्रैटिट्यूड जर्नल करने वाला पेन रखा हुआ है जिससे मैंने लिखा था अभी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो इवन टेबल के लिए थैंक यू बोलना, जिसको हमने शुरू से फॉर ग्रांटेड लिया है कि ठीक है बिग डील, कर्टन रॉड्स को थैंक यू बोलना। इमेजिन अगर रॉड नहीं होती तो,
है ना? रॉड नहीं होती तो कर्टन कैसे लगते, कर्टन लग ही नहीं सकते थे। तो ये छोटी छोटी चीजों को जिनको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हमारा दिमाग ही नहीं इतना इवॉल्व है कि हम इन सब चीजों की तरफ जाएं, कि सेफ्टी पिन के लिए थैंक यू बोले। सेफ्टी पिन बड़ी काम आती है, आज द गर्ल्स दे विल ऑल नो। ओके, बहुत काम आती है सेफ्टी पिन। हम लोग को, हम साड़ी नहीं पहन सकते बिना सेफ्टी पिन लगाए। कभी हमारे इधर हुक टूट रहा है, कभी उधर बटन टूट रहा है, ऑल दैट, यू नो। सो सेफ्टी पिन कम्स वेरी वेरी हैंडी टू अस। वी कीप लुकिंग फॉर, किसी के पास सेफ्टी पिन है, किसी के पास है इस तरह से, यू नो। सो ये छोटी छोटी चीजों के बारे में सोचना, वाओ दिस इज ब्यूटिफुल, okay, and feeling gratitude for it, this will shift our energy, and by the law of attraction what you attract will be shifted big time, because gratitude की energy बहुत elevated होती है। So that is what is about। और रात को सोने के पहले मैजिक रॉक, मैजिक रॉक इज एक रैंडम पत्थर जो हमारा मैजिक रॉक है और रहेगा, उसको मुट्ठी में लेके पूरी दिन भर में जो अच्छी अच्छी चीजें हुई हैं उनको सोचना, और उसमें से जो बेस्ट चीज है उसको थैंक यू बोल के कोई अच्छा सा विजन होल्ड करके सो जाना। दैट इज वॉट, दिस इज हाउ वी स्लीप। सो वी वेक अप इन ग्रैटिट्यूड, वी स्लीप इन ग्रैटिट्यूड, और पूरे दिन हम ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में वाइब्रेट करते हैं। सो दैट इज हाउ लाइफ चेंजेस। पूरी हमारा क्वांटम फील्ड तो पूरा ही चेंज हो गया है, जिसके कारण हमारे सारे बाहर से जो चीजें हम अट्रैक्ट करें वो डेफिनेटली हमारी एनर्जी को मैच करेंगी। ठीक है, सो नाउ वी गो टू द अदर बुक विच इज द मिरेकल्स ऑफ योर माइंड, एंड वी आर डूइंग द चैप्टर ऑफ द मिरेकल एंड मनी। ओके, कल ही हमने शुरू किया था, थोड़ा सा ब्रीफ पढ़ा था, जिसमें यू नो लाइक डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने हमको बताया था कि पैसा एक माइंडसेट होता है। अगर दिमाग में अबंडेंस है तो आप अबंडेंस अट्रैक्ट करोगे। और उन्होंने बोला था कि रात को सोने के पहले आप कोई अच्छी सी एफर्मेशन बोल दिया करो, जो उन्होंने हमको बताया था, बाय डे एंड नाइट आई एम बीइंग प्रॉस्पर्ड इन ऑल ऑफ माय इंटरेस्ट्स। उन्होंने ये बोला था करने के लिए, दैट आप बस ये बोलो, ये चैन करो, और फिर उसको सोचते सोचते, मन में सोचते सोचते सो जाओ। आप सबकॉन्शियस माइंड में वो ब्रू करेगा और वो हमारी रियलिटी बनेगा। ठीक है, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड की पावर को हम समझते नहीं है, लेकिन अब समझ रहे हैं धीरे धीरे। यस, मीतू, you're reading for us today? Yes, yes. Good morning. I know it's so much of time, but auto suggestion. Auto suggestion succeeds best when it is specific and it does not produce a mental conflict or argument. Hence, the statements made by this man made matters worse because they suggested his lack. The subconscious accepts only your convictions and beliefs, not just words or statements. The dominant Sorry, maybe idea. we've read this already yesterday. Acha. I'll just take you through, yeah. So, yeah, I suggested. I suggested to one businessman whose sales were very low and he was greatly worried that he sit down in his office, get quiet, and repeat this statement over and over again. My sales are improving every day. I am advancing, progressing, and getting wealthier every day. This statement कुछ engaged समझ the नहीं, एक सेकंड cooperation. This engagement engaged the cooperation of the conscious and subconscious mind. Results followed. The above is a very simple, unique way of impressing the subconscious mind with the idea of wealth. Perhaps you're saying as you read this chapter, I need wealth and success. This is what you do. Repeat for about 5 minutes to yourself 3 or 4 times a day. Wealth, success. These words have tremendous power. They represent the inner power of the subconscious mind. Anchor your mind on the substantial power within you. Then conditions and circumstances corresponding to their nature and quality will manifest in your life. You are not saying, I am a success or I am wealthy. You are dwelling on real powers within you. There is no conflict in the mind when you say wealth or success. Furthermore, the feeling of wealth and success will well up within you as you dwell upon these ideas. The feeling of wealth produces wealth. The feeling of being successful
produces success. Keep this in mind at all times. The subconscious mind is like a bank, a sort of universal bank. It magnifies whatever you deposit or impress upon it, whether it is good or evil. You sign blank checks when you make such statements as there is not enough to go around or there is a shortage. Maybe I will lose the mortgage, etc. If you are full of fear about the future, you are also writing a blank check and attracting negative conditions to you. The subconscious mind takes your fear and belief as your requests, proceeding in its own way to bring obstacles, delays, lack, and limitations into your life. To him that hath the feeling of wealth, more wealth shall be added. To him that hath the feeling of lack, more lack shall be added. The subconscious mind gives you compound interest also. Every morning, as you awaken, deposit thoughts of prosperity, success, wealth, and peace. Dwell upon these concepts. Busy your mind with them as often as possible. These positive thoughts will find their way as deposits in your subconscious mind and bring forth abundance and prosperity. Yeah, me too will be reading only so much today. Thank you so much for reading so beautifully. Thank you. Thank you. ओके सो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हमने इसमें सीखी हैं। ये जो 3 पैराग्राफ्स हैं, फर्स्ट पैराग्राफ में उन सारे लोगों के लिए है जिनका अपना काम है, जिनका अपना बिजनेस है, जिसमें उन्होंने डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने एक बहुत अच्छी एफर्मेशन दी है और ये कहा है दैट मतलब उनके पास एक बिजनेसमैन आया था और उसने ये बोला था कि मेरी इनकम उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से मतलब आई रियली वांट टू टेक इट हाई। तो डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने उस पर्सन को बताया था कि रोज अपने अपने आप को अल्फा स्टेट में लेके जाओ, मतलब गेट काम, गेट इजी, गेट बैलेंस्ड इन द हेड एंड कीप रिपीटिंग दिस। माई सेल्स आर इम्प्रूविंग एवरी डे, आई एम एडवांसिंग, प्रोग्रेसिंग एंड गेटिंग वेल्दियर एवरी डे। तो जिनके भी यहाँ पे बिजनेस हैं वो प्लीज इस सेंटेंस को लिख लें, है ना। और दिन में 2 या 3 बार आपको ये पढ़ पढ़ के स्लोली रिपीट करना पड़ेगा। स्लोली पढ़ेंगे तभी इम्प्रेस होगा सबकॉन्शियस माइंड में। और जो लोग जॉब में हैं, जो वैसे भी इनकम बढ़ाना चाहते हैं, तो वो माई सेल्स की जगह माई इनकम कर देंगे। ठीक है, जो लोग जॉब में है वो इनकम कर देंगे और जो लोग बिजनेस में है वो सेल्स कर देंगे। तो सेल्स तो ओरिजिनली है ऑफ कोर्स। तो ये एफर्मेशन बहुत पावरफुल होती है। माई इनकम इज इम्प्रूविंग एवरी डे, आई एम एडवांसिंग, प्रोग्रेसिंग एंड गेटिंग वेल्दियर एवरी डे। ठीक है, अब आप हाउ में मत जाना, कहाँ से आ रहा है, कैसे हो रहा है, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड इज गॉड। आत्मा ही परमात्मा होती है। ठीक है, परमात्मा को डायरेक्शंस देने की जरूरत नहीं है, उन्होंने ही हमको क्रिएट किया। जो हमारे पास आज है वो उन्हीं की बदौलत है। इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड, it's a gift from the universe. Everything that we have in our life is a gift from the universe, so we don't need to give instructions to the universe. So you just need to keep repeating this sentence so that subconscious mind, which is also known as the powerhouse or the god within us, okay, says the same thing. I mean, like, it absorbs this fact. Ye wala sentence. My income is improving every day. I'm advancing, progressing, and getting wealthier every day. So it's not end of the month. It is every day. Very powerful sentence which we need to कीप रिपीटिंग। ओके, तो इसीलिए इसको एक पेपर पे लिखना होगा आपको, थोड़े से हार्ड पेपर पे लिखना, पतला पेपर होगा तो वो हो जाएगा, नहीं तो यू कैन राइट इट ऑन योर इन योर मोबाइल, विच एवर वे यू वांट इट। ठीक है, धीरे धीरे तो याद हो ही जाएगा। फिर उसके बाद उन्होंने एक और बताया कि जिन जिम में से हम सब लोग जो जाते हैं वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी, तो वो कह रहे, उन्होंने ये बताया कि दिन में 3 बार 5 मिनट के लिए, 5 मिनट का टाइमर लगा के, दिन में 3 बार 5 मिनट का टाइमर लगा के बस ये 2 वर्ड्स यूज करने हैं, वेल्थ सक्सेस, वेल्थ सक्सेस, वेल्थ सक्सेस, वेल्थ सक्सेस, वेल्थ सक्सेस, 5 मिनट के लिए दिन में 3 बार। उसमें से पहली बार मॉर्निंग में होना चाहिए,
और एक बार जरूर रात को होना चाहिए। एक बार दिन में किसी भी टाइम आप कर लो, जब भी आपके पास टाइम हो। पूरा सेंटेंस वो बोल रहे हैं कि आपको ये बोलने की जरूरत नहीं, आई एम नॉट, आई एम अ सक्सेस, आई एम गेटिंग वेल्दी, आई एम दिस, जस्ट वर्ड। एंड स्लोली स्लोली ही सेज दैट इन वर्ड्स का मतलब गॉड को तो पता ही है ना, क्योंकि वर्ड्स में एक एनर्जी होती है। जब हम शब्द बोलेंगे ना, जैसे मैं बोलूंगी वेल्थ, 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 मेरा ऑरा एक्सपैंड होता जाएगा, बिकॉज वेल्थ एक बहुत स्ट्रांगली प्रोग्रेसिव वर्ड है। ठीक है, मतलब इट मीन्स प्रॉपर्टी भी बन रही है, अच्छी चीजें भी घर में आ रही हैं, पैसा भी आ रहा है, ज्वेलरी भी आ रही है, फ्रीडम मिल रही है पैसा खर्च करने की, वो सारी चीजें। सो वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी, संपन्नता। तो धन, संपन्नता सब घर में आती जाएगी आपकी जिंदगी में। आप अट्रैक्ट करोगे अपनी मेहनत, अपने ऊपर वर्क करके, किसी और को फिक्स करने की जरूरत नहीं है। It is not that job going right and wrong which is giving you wealth. You are giving yourself wealth because of whatever has been fed into the subconscious mind, the seeds within. Now change that seed. You want to remove the defective seed? Does not matter. Change the energy. Energy can neither be created nor destroyed, but it can be transformed, right? Change, transform that energy, and don't discuss it too much again and again with anybody. Just keep working. चुपचाप मुंह पे टेप लगा के अपने ऊपर काम करो। किसी को कोई कहने की जरूरत नहीं है मेरी तबीयत ऐसी है वैसी है, कुछ नहीं, नथिंग। अपने ऊपर काम करो, रिजल्ट सबको दिख ही जाएगा, है ना। बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं होती। अच्छी बातें करनी है, उन लोगों से बात करो इस बारे में जो आपकी फ्रीक्वेंसी में रहते हैं, जो आपको समझते हैं। अगर किसी ने बोल दिया कि तुम्हारा दिमाग खराब है, आज तक तो तुमने कुछ कमाया नहीं है, सडनली तुम बहुत प्रॉस्पेरस हो जाओगी, तो हमारी फ्रीक्वेंसी उनकी वजह से डाउन हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि सबसे सबसे कुछ ऐसी चीजें डिस्कस नहीं करनी चाहिए। जस्ट कीप इट टू योरसेल्फ, वर्क ऑन योरसेल्फ। सबको नजर आने लग जाएगा, है ना। किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सबको नजर आता है कोई किस क्वालिटी ऑफ लाइफ जीता है। सो नथिंग इज, सो जस्ट कीप इट टू योरसेल्फ एंड कीप वर्किंग ऑन योरसेल्फ, जस्ट कीप पुटिंग दी सीड्स, वेल्थ, सक्सेस। ये इस वाले पैराग्राफ में उन्होंने दिया हुआ है। और दिन में 3 बार फॉर 5 minutes. Okay, if you can do it for 10 minutes, nothing like it. If you have that kind of a time, or you can do it 5, 5, 10, or 5, 10, 5, 5, 10, 5, ऐसे ऐसे। और अगर बहुत ज्यादा स्ट्रगल चल रहा है तो दिन में 3, 4 बार भी कर सकते हैं, लिखा हुआ उन्होंने 3 to 4 times। ठीक है, सो ये। एंड धीरे धीरे, बिकॉज वर्ड्स हैव गॉट द एनर्जी, यू विल स्टार्ट बिकमिंग दैट। Your being at the quantum level will start changing, and you will start vibrating in the energy of wealth and success, and very soon you will attract it into your life. That is what he has said. उसके बाद इन्होंने ब्लैंक चेक के बारे में बोला कि ब्लैंक चेक लैक का पर्सपेक्टिव देता है, कि मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मैं ब्लैंक चेक भर रही हूँ। तो इसलिए, बट हम जो करते हैं मैजिक चेक प्रैक्टिस में, उसमें हम पैसे के लिए नहीं करते हैं, उसमें हम उस चीज के लिए करते हैं जो हमको चाहिए, और हम उस चेक में ग्रैटिट्यूड की एनर्जी डालते हैं, इजंट इट। क्योंकि चेक के आसपास आप देखना खूब सारे लाइक एम्बर्स ऑफ, खूब सारे लाइट लाइट वो हैं, इधर उधर से लाइट्स आ रही हैं, दैट मीन्स ग्रेटिट्यूड की लाइट है। सो दैट डज नॉट वर्क लाइक दिस। कई लोग ब्लैंक चेक ऐसे ही भर देते हैं कुछ भी, एंड देन इट, उसमें लगता है अभी तक आया नहीं, अभी तक आया नहीं, अभी तक आया क्यों नहीं, अभी तक आया नहीं। ऐसा नहीं है। हमने उसमें चेक भरा था, उसमें हम बहुत ग्रैटिट्यूड डालते हैं, और विजुअलाइज हम उस चीज को करते हैं दैट वी वांट टू बाय विद द मनी दैट वी मेंशन ऑन द चेक। वी डोंट जस्ट मेंशन द चेक, right? We visualize the thing and we say thank you for that item. Suppose I want to buy a Mac, whatever, or I want to buy an iPhone, and I think I want 1,30,000 for it, suppose, है ना। तो हमने चेक पे भरा, तो हम ब्लैंक चेक भर रहे हैं, लेकिन हम विजुलाइज, बातें, ग्रैटिट्यूड सब उस आईफोन के लिए कर रहे हैं जो 1,30,000 का आ रहा है। हम चेक के मनी के लिए नहीं थैंक यू बोल रहे हैं उसमें। सो दैट वर्क्स वेरी डिफरेंटली, जस्ट इन केस यू गेटिंग कंफ्यूज, बिकॉज दिस कुड बी द क्वेश्चन आई वुड हैव आस्क्ड। ओके, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो नाउ देन, उसके आगे डॉक्टर मर्फी ने बोला है दैट बिजी योर माइंड विद द वर्ड्स प्रोस्पेरिटी, सक्सेस, वेल्थ, पीस। जैसे आप सुबह सो के उठते हो, प्रोस्पेरिटी, सक्सेस, वेल्थ, पीस। तो ये फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ के लिए भी हो गया, पीस ऑफ माइंड हो गया, सक्सेस इन ऑल एरियाज, आपके वर्क डोमेन के लिए भी हो गया, पैसे के लिए भी हो गया। तो आपकी सारी नीड्स इसमें फुलफिल हो रहे हैं, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, मनी, करियर,
है ना, सब कुछ हो रहा है. सो जस्ट दीज 4 वर्ड्स ही सेइंग कि सुबह उठो तो डिपॉजिट दीज थॉट्स, प्रोस्पेरिटी, सक्सेस, वेल्थ, पीस. अब इसमें भाषा का तो कोई यूज ही नहीं है, कोई लैंग्वेज तो है नहीं, ये तो सिर्फ शब्द है, क्योंकि शब्दों की दुनिया है. योर वर्ड्स आर योर वॉन्ड, लिटरली. ओके, सो शब्दों की ही दुनिया है ये. वन वर्ड चेंजेस एवरीथिंग से हमारी मैजिक बुक की शुरुआत हुई थी. Isn't it? One word. So ये words ही तो हैं 4. Prosperity, success, wealth, peace. लिख लो और अपने कबर्ड पे चिपका दो उसको, या अपने मोबाइल पे डाल दो. मोबाइल का कवर लगा होता है, उसके अंदर डाल दो आप पीछे. आपको जहां डालना है, आपने अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है अपने लिए, आप वहां पे ये 4 डाल दो. प्रोस्पेरिटी, सक्सेस, वेल्थ, पीस. एंड यू विल बिकम दैट. एंड हाउ कूल इज इट, है ना. ये जो मैंने कल बताया था, जब पैसे आते हैं और वो फ्रीडम होती है ना कि आप कुछ भी खरीद पाओ, उसमें इतना मजा आता है. बट क्रिएट दैट, या इट इज सो इजी, इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट. परेशान मत हो आप लोग. मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब आप लोग छोटी छोटी चीजों के चक्कर में परेशान होते हो. रिश्ते के चक्कर में, पैसे के चक्कर में. सब बदल जाएगा, सब इतना अच्छा होगा कि आपको जिंदगी जीने का मजा आ जाएगा. ठीक है, क्रिएटेड, परेशान मत हुआ करो. पावर तो आप ही के अंदर है. वो पावर अभी तक रियलाइज नहीं की थी, मे भी हमको पता नहीं लगा था उसको टैप कैसे करना है, उसको कैसे सक्शन की तरह स्ट्रॉ लगा के खींचनी है, ये अभी तक नहीं पता था. ठीक है, कोई बात नहीं. हर चीज समय से ही हमारी जिंदगी में आती है. देयर इज ऑलवेज द राइट टाइम फॉर एवरीथिंग. सो दिस इज द राइट टाइम. ठीक है, बिकॉज इन प्रैक्टिसेस में आने के लिए भी आपके कर्म बहुत अच्छे होने चाहिए, तब जाके आप यहाँ लैंडिंग करते हो. नहीं तो इस शहर में लैंडिंग बहुत आराम से नहीं हो पाती इन द वर्ल्ड ऑफ ग्रेटिट्यूड स्टडी. यहाँ पे अगर आपका प्लेन लैंड किया है, आपकी जिंदगी का प्लेन, इसका मतलब है आपके बहुत अच्छे कर्म, आपके सोच विचार बहुत अच्छे रहे कि अब टाइम आ गया है किस्मत बदलने का. तो इसलिए भरपूर इंजॉय करो. ठीक है, कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा. ठीक है, आलसी लोगों के लिए है ही नहीं ये प्रैक्टिसेस. कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी होता है. नहीं रहोगे तो, अगर अगर मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा डिफरेंस आया है, वो इसलिए आया है, कंसिस्टेंसी के कारण आया है. मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि अगर मैं सेशन, सुबह मेरी फ्लाइट्स होती हैं बहुत, बिकॉज मेरे काम की वजह से मुझे ट्रैवल बहुत करना पड़ता है, तो फ्लाइट्स होती हैं तो मैं प्रिया मैम का सेशन सुनती हूँ पूरा. ऐसा नहीं है कि आई विल जस्ट, मुझे तो पता ही है, मैं तो खुद ही लेती हूँ, मुझे सुनने की जरूरत क्या है, मुझे अब सब आता है. आई नेवर, ये थॉट मेरे दिमाग में कभी नहीं आया है. आई मीन पीपल हु ट्रैवल विथ मी, जब हम बाली गए थे, मैं, पूनम एंड मीना, सो एवरी डे जब प्रिया का वहां पे टाइम लेट होता था तो सेशन नहीं लिया था, क्योंकि वो कैब आ जाती थी हमको पिक करने के लिए, वो साइट सीइंग का, क्योंकि हमने वो प्री ऑर्गेनाइज वो टूर पैकेज लिया हुआ था. तो मैं पूरे टाइम सेशन हमारा ऑन रहता था. मैं बाथरूम में होती थी तो ब्रश कर रही हूँ तो तब से ही वो सेशन कभी शुरू हो जाता था, कभी कैब में होती थी सेशन शुरू हो जाता. तो ऐसा कभी नहीं होता था कि मैंने सेशन नहीं सुना है. दैट लेवल ऑफ कंसिस्टेंसी इज रिक्वायर्ड. ऐसा नहीं कि मैं मस्ती में, आई एम पार्टिंग विद माई फ्रेंड्स और दिस आई गेट कैरिड अवे. नो, आई नो वेयर टू ड्रॉ द लाइन्स in my life. This is how success comes. Okay, so this discipline will also bring a lot of changes in the other areas of your life also. मतलब ये सेशंस हमको सिर्फ ज्ञान नहीं देता है, प्रैक्टिसेस देता है, जिंदगी बदलता है, बट ये हमारी जिंदगी में बहुत डिसिप्लिन भी लेके आता है ना. अच्छे इंसान तो हम बन ही जाते हैं, लेकिन डिसिप्लिन भी बहुत ज्यादा आता है. सॉरी, ये सेशन बहुत लंबा हो गया, extra long, but then I really wanted to read this because ये chapter I think is important for all of us. Wealth, prosperity, peace and success is very important for all of us. इसीलिए तो धरती पे आए, यही 4 चीजों के लिए. पीस ऑफ माइंड लाने के लिए, इसके लिए लोग कैलाश पर्वत पे जाके मेडिटेट करते हैं. हम अपने आप को पीस पीस बोल के हम पीसफुल इंसान हो जाएंगे इसी शहर में रह के, है ना. चाहे नॉइजी सिटी हो हमारा, बट यहीं पे रह के हम ऐसे हो जाएंगे. यहीं पे रह के हम सुपर सक्सेसफुल होंगे जो भी काम कर रहे हैं, और यहीं पे रह के हम प्रॉस्पेरस होंगे, और यहीं पे रह के इन सिचुएशंस में ही हम अपने आप को वेल्दी बनाएंगे. यही तो मजा है करने का. सो दैट इज ऑल वी हैव फॉर द स्टडी. थैंक यू सो मच. यस, रितु. Yeah, hi Deepti, good morning. Thanks for transforming me so beautifully. There's a question for today's assignment, that what if 2 members of the family are in conflict with each other? What can I do for that? Can I mean, do the assignment for them? No, I mean, those people have come there. You can just write your 10 times. That is not your life, no? Matlab, Yeah. but
There are two people, so all you can write is that thank you, universe, for a lot of peace and harmony in my family, or whatever it is. Like if it's a non-family, also peace and harmony between those two people. Thank you, universe, for the peace and harmony in my family. That is all you need to write. You can write it 11 times or 21 times, but you'll have to do it daily till the time you don't start seeing the difference. Yes. Okay. I'm seeing a lot of difference, but still I need more. No, we should always need more. A lot. Yeah. Yeah. From Thank you 100 so crore, much. we have to go to 200 crore also. Yes, absolutely. Yeah. Thank you so much, Deepti. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you, Thank you, everyone. ma'am. Awesome session. Tomorrow. Yeah, sorry. Awesome session. Thank you so much, ma'am. Thank Thank you, so much, Dipti. ma'am. Thank you so much. Thank you, ma'am. Really, Lovely. really neat. Thank you